let me start with our top story here. And we have this young journalist joining us. I'm letting you know now, but we'll tell you the story here that's really shocked me as I belong to the same fraternity. This young girl, a 27-year-old journalist, was beaten up for just doing her job. Sneha Barve, an individual, an independent journalist, was investigating an illegal encroachments that was happening in a village called Netowadi. In fact, this is in Pune, and she was doing her job to try and expose these illegal encroachers, the land grabbers, the land mafia as it's called. She had been tracking how tin sheds were being built on government land near a riverbed, land that had allegedly been taken over by local goons there. And while she was just reporting, she was standing there with her mic and reporting, here's how she was attacked. Sneha was caught off guard. She was hit from behind. She fell to the ground. And then, of course, rods that were used, as you see in those visuals there. She was brutally beaten on her back, her arms, even her head. Locals who saw her lying bloodied on the ground rushed her to the hospital. That's what really saved her life. This was how Sneha was reporting. And while she was reporting live, these men, women, both came armed and started beating her brutally. The story does not, of course, end there. This happened on July 4th, but no one really knew until a chilling video of the attack went viral days later. In it, you can see Sneha fully helpless on the ground, being beaten by these men who clearly weren't afraid of any consequences. Police did arrest 5 men, but all of them are now out on bail. The man, in fact, Sneha has named in the complaint as the main accused. That very man, Pandurang Morde, has not been arrested yet. Now, we hear that Sneha at this point is critical. She's going to be joining us. She will be speaking elaborately on what really happened. But as we see here, the main accused has still not been arrested, and the claims that the police give is that he is in hospital for a foot injury and therefore they're not able to arrest him. But Sneha herself is in the hospital at this point. She questions many levels of lapses within the police department and the government. Why hasn't the Maharashtra government acted on this? This is a young woman journalist who's attacked in broad daylight by the land mafia and no justice at all. The lady herself trying to fight her own case, but there's not been anyone within the government or the state police who's batted an eyelid over what's happened here. Sneha Barve joins me live. Thank you very much, Sneha. I hope you're doing okay. आप बात कर सकते हो. मुझे पता है कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, मगर फिर भी आप बोल सकते हो हमें कि क्या हुआ है. 4 जुलाई को मैं रिपोर्टिंग करने गई थी. तब उधर नाले आधा नाला गाड़ के उसके ऊपर अतिक्रमण किया था, और वो अतिक्रमण ऐसा किया था, वो नाले को जब बाढ़ आएगी तो वो पानी पूरा भाजी मंडई में जाएगा. इस वजह से मैं रिपोर्टिंग करने गई थी. तब पांडुरंग मोरडे नाम का आदमी ने मुझे जोर से पीछे से मारा. ये आप ये केस के बारे में बोल सकते हो. ये पांडुरंग जो बोल रहे हो आप, मेन अक्यूज्ड, उनको अरेस्ट किया नहीं गया है. इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? ये इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? हाँ, उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, लेकिन उनके पैर में चोट लगी है ऐसा समझ आ रहा है. लेकिन उधर क्या हुआ है, क्योंकि मैं बेहोश थी. मुझे मालूम नहीं उनको चोट कैसे आई है, क्या ये बनाव किया है, सब मालूम नहीं है कुछ अभी तक. तो आपको पता नहीं है कि पुलिस ने पॉलिटिक्स क्यों नहीं अरेस्ट किया है? उनको पैर पे चोट लगी है इसलिए अरेस्ट नहीं किया है. आपको क्या हुआ है? आपका इंजरीज के बारे में हमें बताइए. ये हमें विजुअल दिख रहा है यहाँ पर वीडियो में. आपको पीट के इतना बुरी तरीके से पीटा है लकड़ी और वेपन्स के साथ. आप अपना ड्यूटी कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे. अगर मैं भी होती वहां पर, पता नहीं क्या करते वो. हाँ, उस टाइम पीछे से आकर उन्होंने मारा. मुझे यहाँ इंजरी हुई है, और पीठ के यहाँ भी हो गई है, और कान में से भी खून आया था मेरे.
ऐसा है अभी सिचुएशन। स्नेहा, मुझे पता है कि आप बात नहीं कर पा रहे हो ज़्यादा क्योंकि आप अभी भी ट्रीटमेंट ले रही हो, मगर कितने दिन से आप हॉस्पिटल में हो? मैं पहले 2 दिन थी हॉस्पिटल में, और उसके बाद अभी जाती हूँ और फिर वापस आती हूँ। ट्रीटमेंट चालू है मेरी। आपका घाव कहाँ कहाँ हुआ है? सिर के नीचे, कान पे, और कमर के यहाँ। ये तो विजुअल बड़ा भयानक है। क्या हम्म। पुलिस ने आपकी पूरी मदद की है? 5 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है, ये कौन है 5 लोग? मुझे तो वो पांडुरंग मोरडे बाद में पता चला वो गुंडा है, और उसके बच्चे, मतलब उसके 2 लड़के हैं उनको, और बाकी लोग कौन थे वो मुझे भी पता नहीं है। और पुलिस ने ज्यादा हेल्प नहीं की क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा एक्ट्स नहीं लगाए गए, नॉमिनल सेक्शन लगाए हैं। अच्छा। ये आप केस के बारे में बता सकते हो? लैंड माफिया मुझे पता है खतरनाक है। मैंने तो बेंगलुरु में भी एक माइनिंग माफिया को अनकवर किया था, तभी उन्होंने हमारी गाड़ी को मारा, हमें धमकाया, डराया, और बहुत बहुत महीने ऐसा ही चला। डरा के हमें चुप कराना चाहते थे। मैंने हम्म। फेस किया है ये, मगर थैंकफुली आप आपको जैसे पीटा है, मुझे पीटा नहीं गया। जब तक तो मैं पुलिस के पास पहुंची, हमारा चैनल TV9 और न्यूज़ 9 नेटवर्क के बहुत अच्छी तरीके से हमने कवर किया, तो वो डर गए। मगर आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, आपके आगे पीछे हाँ। कोई नहीं है, आप अकेले कर रही हो ये। आपको कभी डराया गया था इससे पहले? आपको पता था कि ये लोग आ बहुत रहे हैं आपको मारने के लिए? बहुत बार डराया गया, लेकिन ये सब उधर मैं रिपोर्टिंग करने गई थी फील्ड पे, तब ऐसा लग नहीं रहा था मुझे कि ये हादसा इतना बड़ा होगा। अच्छा, आपको पता नहीं था। आपने बोला कि कोई पॉलिटिशियन ने आपको धमकाया है। किसने धमकाया है? वो माजी खासदार थे, शिवाजी आढळराव पाटील करके। अ, उन्होंने पिछली बार मुझे बोला था कि इलेक्शन हार गए थे हो, तो उन्होंने मुझे बोला था, अब तेरी वजह से मैं इलेक्शन हार चुका हूँ, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं वगैरह। उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था उस टाइम। उसके बाद भी मेरे ऑफिस के बाहर भी कुछ लोग उनके मेरे साथ झगड़े कर रहे थे। और अभी भी ये पांडुरंग मोरडे नाम का जो आदमी है, उनका और उनका कनेक्शन एक ही है। स्नेहा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ 2 लोग हैं जो शायद कुछ आपकी मदद कर सकते हैं, एंड मे बी कैन एलैबोरेट what kind of political clout these accused hold here. I have with me joining us Chandrasekhar Jha, spokesperson Shiv Sena UBT. We also have Krishna Hegde, spokesperson Shiv Sena Eknath Shinde camp. I'll start with Mr. Krishna Hegde. Sir, there are claims and allegations that the man here accused in this case could be linked with the Shinde camp of the Shiv Sena. Would you want to clarify? Sir, Mr. Krishna, I think you'll have to unmute yourself. Yeah, I'm not aware of Mr. Pandurang Murde as a office bearer of our party. But let me state here that, the media and press is the fourth pillar of democracy. And therefore, if someone is doing his duty to uphold democracy, then there should not have been such an attack. However, I have only read and heard about the superintendent of police statement, who said that this seems to be a property dispute, and 4 brothers sold the property to one person, and the fifth brother has not done so, and possibly he is the complainant in the case. This is, I am quoting directly from the police sources, and not according to what knowledge I have. I may be wrong also, but I am just saying this. And the police have stated that they have arrested 5 people, out of which 2 sons of the accused have been arrested. The accused is in hospital because he has sustained a fracture, and the superintendent of police has said that the moment he is discharged, he will also be arrested. So I think the government has played its part
in arresting the accused or whoever the assailants are, and Now, therefore we a cannot say question to much you. over You this. call the journalists the fourth pillar of our constitution. You, the video that I see here really alarms me. The lady has been pushed to the ground and she's been brutally beaten with sticks and rods and whatnot. Why such light sections that have been imposed against the accused? Has there been any involvement in the government to ensure that the most stringent punishment goes to those people who have assaulted her? That man No, Pandurang is in the hospital because he has a knee injury or a leg injury, but he's not been taken into custody. We are not sure if the police have questioned him and whatever has happened there. But why such light sections that have been imposed on these men who almost tried to murder her? so it is not about imposing light sections. The superintendent of police has said that one Mr. Sudhakar Kale or Kalse or someone has lodged an FIR in this case, and whatever sections he has imposed have been taken on record. And the superintendent of police, Mr. Sandeep Gill, has already stated that if the sections have to be enhanced, they will definitely be enhanced after he meets the victim. And therefore, I do not see that anywhere the police is hand in glove with anybody or we are trying to protect anybody. I think the lady deserves justice and she will get her justice. Well, justice delayed is justice denied. We know that very famous saying. But I will, of course, also bring in our guest from the Shiv Sena UBT camp, Chandrasekhar. Your take on this? There are allegations that the man could have links with the Shinde camp, but whatnot. Our spokesperson here from there has said they have no knowledge of this man being a party functionary, so they're distancing themselves. How would you look at this case? An independent journalist who has fearlessly reported on the land mafia, a case of land grab here. Well, sir says that this is a personal property dispute. We'll keep that aside. We'll delve into it in a few minutes. But your take on the way a journalist has been assaulted brutally with men, women coming together with rods and sticks and thrashing her. See, with regard to the maoism in Maharashtra, recently Supreme Court has granted a CBI investigation into the Thane illegal buildings cases. So, if those things are to be seen, then mafiaism with regard to illegal grabbing or land cases or building cases is rising in Maharashtra. Second thing is that the journalist is openly being attacked in broad daylight and grievous hurt amounting to death, which may have occurred or may not occur. It is subsequent to that. But eventually, if you see such an attack, creates a picture which cannot be negated at this stage because the lady is being attacked very heinously and with a rod, and it deems to be an offense, very serious offense. But eventually, the police is not taking care or not taking the action under the laws of the Maharashtra as well as the BNS. So that is questionable, and eventually the journalist being attacked in this nature in Maharashtra, this is happening for a very first time in Maharashtra because Maharashtra picture does not belong to this kind of seriousness or say serious offenses being done in Maharashtra. So this contributes to starting of the Jangal Raj in Maharashtra. I don't know, but eventually this picture gives a very serious thing, and it should be taken care of. Otherwise, this will be further future. The mafias will act much more aggressive. No, I mean, on the you have what tenders. example are we setting for women who are daring to speak truth to power? Sneha has really had the courage to report there. Sneha, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो गवर्नमेंट में है शिवसेना शिंदे कैंप के, वो बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है. आपने एक फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बीच में आपने इंटरफियर किया है, इसलिए शायद हुआ है. जस्टिफाई नहीं कर रहे मगर बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है. आप बताना चाहते हो कि ये केस एग्जैक्टली क्या है? एज फार एज माय नॉलेज गोज, दिस केस इज अबाउट लैंड ग्रैब ऑन अ रिवर बेड. बोलिए स्नेहा. नाला उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, नाला एक शासकीय प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है. उसके ऊपर उन्होंने अतिक्रमण किया था और मैंने वो बातमी कवर की है अतिक्रमण की, जो कि बाजू में भाजी मंडई है
और भाजी मंडई के बाजू में ही वो नाला है, उसके ऊपर आधा वो नाला गाड़ के उसके ऊपर अतिक्रमण किया है। पतरा शेड का काम चालू था, और वो पतरा शेड का काम चालू था। और अभी बारिश का टाइम है, तो बारिश आने के बाद ज्यादा पानी आने के बाद वो पानी सब भाजी मंडई में जाएगा, रास्ते पे आएगा, शहर में जाएगा। इसकी वजह से वो रिपोर्टिंग में कर रही थी। हम इतना गर्व लेते हैं आपकी रिपोर्टिंग में। आपने जो किया वो हम भी शायद हिम्मत ना दिखाते करने के लिए, मगर आपने अकेले इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के दौर पे आपने जो किया है, वी सल्यूट यू। द जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी हैज़ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। क्या आप डर गए हो, मगर आप वापस जाओगे रिपोर्ट करने के लिए? हाँ, मैं तो जाऊंगी ही। और वो अभी जो बोल रहे हैं प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी के बारे में जो बोल रहे हैं, वो अभी डिफेंस के लिए बोल रहे हैं। मैं रिपोर्टिंग करने जाऊंगी ही। और उन्होंने जो अतिक्रमण किया है, वो अतिक्रमण उन्होंने जो किया है उसकी सब मालूमात लेके मैं उधर रिपोर्टिंग करने गई थी। सीओ, उधर के जो सरपंच है, उनके साथ मैंने बात की थी। उनको नोटिस भी भिजवाई गई थी कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं, वो रुको, रोको उसको। तो उन्होंने उनका भी नहीं सुना था। वो बोले तुम्हें तुम्हें जो करना है वो करो, हाँ मैं मेरा अतिक्रमण चालू रखूंगा। ऐसा पांडुरंग मोरडे ने उधर के सरपंच जो है उनके साथ बात की थी। वो सरपंच जो है उन्होंने मुझे फोन पे बताया भी। उस टाइम मैंने सरपंच को भी ग्राउंड से कॉल किया था। वो कॉल भी रिकॉर्ड है। वो न्यूज भी अभी तक यूट्यूब पे है, सब देख रहे हैं वो न्यूज भी। मैंने सीओ को भी कॉल किया था, और तहसीलदार जो है उनको भी कॉल किया था उस टाइम। तो तो आपके उन्होंने पास बताया। सारा सबूत है? सारा सबूत है? हाँ, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग, सारा सबूत है? हाँ, 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 बस मेरे ठीक पास है। सब सबूत है। कृष्णा हेगड़े, you wanted to come in on this. Lake bed is nobody's property. नहीं, मैं आई विल स्पीक इन हिंदी ओनली बिकॉज शी कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। स्नेहा जी, ऐसा है कि हमको वो जो भी एसेलेंट था मोर्डे, उनको डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना वो हमारे साथी है, ना हम उनको जानते हैं। आपके साथ जो हुआ है वो बहुत दुखदायक हुआ है। और जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो पुलिस का स्टेटमेंट है उसका ही मैंने यहाँ जिक्र किया। मेरा उसमें कोई अधिक स्टेटमेंट मैंने लगाया नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर अतिक्रमण कुछ भी होगा, तो जो वहाँ का सीओ है वो एरिया का, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, या जो भी अधिकारी है, वो अतिक्रमण हटाएंगे, और वो उनकी जिम्मेदारी है। उसमें एज अ प्रवक्ता मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। पुलिस जो है वो उनकी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, और उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि छठे जो मेन पांडुरंग मोर्डे है उनका भी वो अरेस्ट किया जाएगा। और उसके अलावा जो पहले एफआईआर, आपसे शायद पहले किसी ने एफआईआर लॉन्च किया है, आपके साथी है या वो नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी ने तो ये आपके पहले एफआईआर लॉन्च किया है। उन्होंने जो सेक्शंस इसके ऊपर लगाए, एक जो इंसिडेंट के ऊपर 2 एफआईआर नहीं लग सकता है, उसके वो पुलिस ने कहा है। लेकिन पुलिस ने ये भी आश्वासन दिया है कि जब आपके स्टेटमेंट देंगे, तो वो एफआईआर को वो एनहेंस करके, अमेंडमेंट करके, अगर और कोई बीएनएस की सेक्शंस लगाने हैं तो वो पुलिस आपके लिए लगाएगी। तो पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जो लोकल एसपी संदीप गिल है उनको आप मिलिएगा, और जो वहाँ के सीओ है, आप कह रहे हैं आपके एरिया के, उनको आप मिलेंगे तो मुझे लगता है कि आपके प्रॉब्लम का आपको हल मिल जाएगा। I really have to ask you a question. She is right now crippled, receiving treatment. Should it not be the responsibility of the officers, officials to go to her doorstep now? She's the Totally, they victim. will. She's been Obviously, harassed. they will. She's been No, threatened. obviously, they will go to her doorstep also, and the investigating officer will investigate our case. No one will be allowed to go scot-free. That is for sure. And especially if someone has beaten up a woman, and that to a journalist, I think they are definitely in trouble.
I want to know if there's suo motu action that will be taken on this. Will the property developers there get a notice? Will it be clamped down on? Will there be NGT checks on riverbed construction? What kind of checks will you carry out? Has there been a decision from the Maharashtra government yet on how to No, go about this? obviously, see, this is the first time this case has come to our notice, and right now, thank your channel also for bringing this up, and therefore, since we have got notice of this incident right now, I'm sure the government is also watching this, and there will be action. Obviously, there should be no illegal construction or construction of any kind on riverbeds. That is absolutely a big no-no. And I'm sure that whether it is the CRZ laws or the other tribunals which are concerning these waterbed bodies, they will also take action on this matter. Okay. Mr. Chandra, would you want to jump in on this? There's a promise now from the Shiv Sena Shinde camp, who's currently in power in the state of Maharashtra, that they're going to act on this, ensure that riverbed violations are going to be clamped down on, that construction will not happen if there is a violation. And they've distanced themselves from the man who claims to have any connect with the Shinde camp. Your take on this. First of all, the news we have brought to light yesterday, but we hear this happened on July 4th, and it's been much over 10 days now. Unfortunately, it's sad to know that the Maharashtra government had no idea about it, but well, we are happy that we got this to your attention. See, the first thing is that we get assurances but no results. In many cases, what we are seeing that the Maharashtra government, the state, the police does not act properly. And in this scenario also lapse of near about 10 days. So what kind of situation is being created in Maharashtra, everybody has come to know. Second thing is the mushrooming of the mafias of land and buildings. Now the Supreme Court ruling which has come, it is categorically showing a very drastic situation in Maharashtra with regard to land grabbing and illegal buildings being made or done under the protection of the powerful people. So this kind of things create certain kind of situation which will aggravate, and the today the journalist is being beaten. Normal citizen, what will happen? You could probably assess what will happen in near future. So we should be very protective. The police should provide security to her, and she should be under the protection of the state. Otherwise, what will happen next, God knows. But eventually, this situation is very drastic, and steps should be taken by the state. All right. I will end with Sneha, of course. Sneha, क्या आप तसल्ली रखते हो कि सरकार कुछ करेगी? आज हम यहाँ न्यूज़ 9 पे हमने आपका केस लिया है, हम फॉलो अप करेंगे, मगर आप सेफ फील करते हो? क्या आप सिक्योरिटी मांगते हो अपने आप के लिए? हाँ, ये जो हमला हुआ था मैम, वो बहुत बड़ा है। मतलब मैंने अभी वीडियो जब देखा तब मुझे पता चला कि उधर लोग नहीं रहते तो मैं आज इधर नहीं रहती। मतलब आपसे बात नहीं होती आज मेरी। क्या आप सिक्योरिटी मांगते हो? आपने मांगा है पुलिस से आपको सिक्योरिटी दे? अभी तक तो मेरी ट्रीटमेंट चालू है। मैं पुलिस थाने एक बार ही जाके आई। उसके बाद अभी जाऊंगी तो ये सब करूंगी मैं। Ji, sir, Krishna, would you want to assure the girl that she will get security from the police? I have no police officer here on the panel. You seem to be the only representative here in terms of the party, but your assurance will mean a lot. So definitely, I think that the police will investigate her case, take the appropriate action, and if she needs protection of any kind, the police has to provide her. And in any case, whoever is the assailant, I'm sure that the first job of the police is to, take him to task. Secondly, regarding the Uddhav Thackeray party spokesperson, my friend, he was talking about illegal construction and Gunda Raj in Maharashtra. I would like to reiterate here that this is a very stable government which works for the people of Maharashtra. Over that, on the illegal constructions, when we let out our bulldozers, they call us the bulldozer Raj and criticize us. And therefore, I think the opposition should also have a positive
approach to the running of the government and be a constructive opposition, not only criticize what we are doing, but also be hand in hand for the support and the welfare of the people of Maharashtra. If we are going after illegal construction, they call us the bulldozer Raj and criticize us. And when we do not go after the illegal, suppose we do not go after the illegal construction, then they say that they are hand in glove with the land and build. You can't have both sides of the coin and All say right, your all story. right, all right. So We'll keep the political blame game aside here at this point. Let's just hope this girl feels safe. She feels safe enough to come back to report and follow through on this story, because we're going to stand behind her until she gets justice. Those culprits need to be behind bars for what they've done, and that project, if violating rules, must be stalled. Thank you very much. I really appreciate Mr. Krishna Hegde for joining us and giving us those answers. Let's hope Sneha is satisfied with them and she feels there is help at this point. Thank you, Sneha. Thank you, Mr. Chandra.